welcome back, friends. So, I have been asked by many that this Adani revelation which has come, what will be the impact on the markets? See, friends, I have no bias in favor of any political party or Adani or whoever. I personally have no exposure at all to any of the Adani stocks, so it doesn't make me a difference. In fact, we don't have exposure to anything. We, as a matter of fact, are only advisory in nature, right? And we are not supposed to be having any positions. We have kept ourselves as transparent as possible. Now, definitely, it's not a good thing if this revelation, even if I would say 20-25% is true, it's still not very correct way of handling a business. So that I am not denying that at all. I My work is to tell you how will the market react. In my opinion, a lot of people are coming with emotions. Don't forget the fact that there will be, if this thing becomes worse in times to come, there will be collateral damage, because there could be margin calls that may come, and it could impact people holding even positive scripts in which they are making money and which are doing well. So there could be a systemic failure in effect, as far as I can see. And therefore you find that a lot of people keep talking about Hindenburg, what they have done in the past, or that everybody knows, that people are making presentations of what they have done, what is Adani, how many, but what will you do with all that? You need to know what's coming next. It's very easy to flash, make all those fancy cover pages and show it to the world and all that. That everybody knows what are the different Adani Group companies and what they have done. It's no doubt he has also done a lot of hard work. I mean, to build such an empire is not a joke. The question is how he has built, and well, there are some issues that have been raised. So that is for the others to investigate. Hindenburg has given their opinion. SEBI is to see now whether any of that portion is up to them. We are just giving you an impression as to how the markets can behave from here. I am concerned with what an Aam Aadmi would be interested in. For example, one of my team members was talking that there are some people who are talking about predictions about various celebrities, actors, and who will win a Brazil versus Argentina game, what will happen in the World Cup, or what can happen with the various political people and their families, like that. How does it affect you as a person if Cristiano Ronaldo or Messi wins or doesn't win? How does it affect you and your pocket? If some celebrity, Shah Rukh Khan's Pathan, does well, how does it impact you and your fortunes? Let me make a very blunt video once and for all. If India cricket team, if Mr. Suryakant Yadav does 2 centuries, how does it affect your pocket? How does your family benefit? When I speak, then I speak very harsh words and people don't like. How does Suryakant Yadav's double century? India does very well. Do you know there's a research that has been done that any country that wins in a World Cup, in a football World Cup, they have a GDP which goes up by 0.5% for 6 months after the World Cup is won. How much is that? Pakistan, very, very good bowling attack. They used to have a fantastic cricket team, much better than India many years back, maybe 2 centuries, when Imran and Sarfraz were there. How did it help the economy of Pakistan? It's in complete shambles. Look at the Pakistan rupee today, 266 rupees for $1. And look, where is India today? Still at 81. It's just a fraction. So just because, even if you have merit, these are personal laurels and personal achievements of cricketers and of Shah Rukh Khans and others you may like. That's your personal preference. But that doesn't help your family. It doesn't help your parents. It doesn't help your wife, your children. I am trying to tell you something which helps an Aam Aadmi, which is not easy to say. Anybody, I can also go and talk about what is the RBI policy, be critical. That's known as armchair economics. But I am trying to give you, it may be tough and I may not be right in everything. Okay. It is quite possible that my reading may not be perfect in every way. But in my opinion, there will be an attempt that this issue cools down.
and you may see that in this cools down, not completely, but at least tempers are frayed, because a lot of people are losing money in court. There's a lot of collateral damage which is taking place. If I look at the markets this forthcoming week, then I may see a lot of volatility. So there will not be a straight fall as many people are expecting that Adani will, whole week will be a washout. No, there will be some very good periods of recovery also, and that can catch many of the shorts by surprise as well. Okay. So what I'm telling you is something which nobody will tell you. I'm telling you that what is concerning an Aam Aadmi, a small person who is an investor in these various stocks. It can also not only Adani stocks, but any stocks in general, because there is collateral damage. If Nifty is falling so much, each and every person is getting impacted. Okay. But I have no bias towards Adani or well, I would appreciate if all of this is false and he has put so much effort to build this generating jobs, then I would be happy. But definitely, if it's not a right way of functioning, then I'm not a person who will support anybody just for the heck of it, as some people are writing. So that's not the right way. And there's no sense in just giving you, telling you about the past, what Hindenburg has done and what that fellow has done. And, just that's a waste of your precious time. So I feel there will be some recoveries in various pockets, but it will not be one way. There will be some negativism also. It will catch both ways. So there will be change in the complexion of this week. And you will need to know what is coming next, because don't forget there's a budget also coming in. So if you are holding positions at the wrong time, you can lose heavily. You will need to know what time the markets will do well, what time it will fade away. But there will be some recovery definitely that they will try and bring into the markets. Otherwise, there can be a systemic failure. And that is very bad for the economy, for the country, for the government, and for the Adani Group also. So it's not going to be an easy thing. And I'm not going to go into the merits of the timing of the FPO and all this and all that. I'm not any person to gauge all that. Hindenburg, I'm sure, has done some research. But who has got what vested interests is another matter. I would like to stay away from the politics. I'm trying to only tell you how the markets can behave, my expertise in giving you timing of the markets, which others don't do. They don't give you the timing, we give you the timing. And to get to know more detail how this markets will fare this week, please do join Premium Plus for the Indian markets. For the US markets, you can join Prime or Prime Plus. The number to get in touch is 9820861044. So you can WhatsApp us on this number. Now going forward to the forthcoming week, be very, very cautious. Therefore, the budget is round the corner, and as I told you, it will not be one way. So like 2 days you saw a slaughter, the people are thinking whole week also to be no, it won't be like that. Okay, there'll be some good periods of recovery also. Okay, only thing you'll have to know when that is coming and where. So we'll be in touch with you, and please do get in touch with us, and गिवन यू द नंबर 9820861044. तो भाई और बहनों, कई लोगों को लगता है कि अदानी जी की ये जो है काफ़ी बड़ी बात तो है ही है. मैं तो मानता हूँ अगर इसमें से 20% भी सच निकलता है तो अच्छी बात नहीं है. भारत के लिए नहीं है, भारत के इमेज के लिए भी सही नहीं है, इकोनॉमी के लिए नहीं है. और उसमें काफ़ी कोलैटरल डैमेज हो सकता है, कई शेयरों को, दूसरों को भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मार्जिन कॉल्स काफ़ी ट्रिगर होने की संभावना है. मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि अब कहाँ से मार्केट यहाँ से नेक्स्ट वीक कैसे रह सकता है. कई लोगों को, अब मैं आपको घुमा फिरा के एक वीडियो बना सकता हूँ अच्छे कवर पेज लगा के कि क्रैश हो जाएगा अदानी की तरफ से ये वो, तो ये नहीं है. मैं आम आदमी से बात करना चाहता हूँ. आम आदमी, आपके पॉकेट में क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. बेकारी की बातें करके कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो कैसा खेलेगा उसकी प्रेडिक्शन करूंगा, या फिर ये जो पॉलिटिशियन है उसकी मदर और उसके फादर के हेल्थ का क्या, अरे उसे आपको क्या लेना देना. आप अपना सोचिए, आपके पॉकेट का, आपकी फैमिली को क्या इम्पैक्ट आएगा. ये जो अदानी का जो खुलासा हो रहा है या हुआ है या जो भी आ रहा है, आपकी पॉकेट में क्या आपको इम्पैक्ट आएगा. आम आदमी से मैं बात करना चाहता हूँ. मैं बेकारी की बातें, दुनिया की ये सेलिब्रिटी शाहरुख खान की पठान का क्या होगा, या शाहरुख खान के, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस, आप चाहे तो देखें, मैं तो नहीं देख रहा हूँ आप, लेकिन आपको चाहिए तो खुद जाके देखिए और इन्जॉय करिए फैमिली के साथ या किसी के भी साथ, वो आपका है. मैं सिर्फ आपके पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक व्यक्तिगत
क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो बताऊंगा। मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी का जैसे पूरा वॉश आउट हो जाएगा दूसरा हफ्ता भी, मुझे नहीं लगता। कई पीरियड्स ऑफ अच्छे रिकवरी भी दिखाई देंगे। इवन अदानी ग्रुप के कई स्टॉक्स में कई बार बाइंग आ सकती है। ये सब कहने के बाद आप खुद का भी विश्लेषण करिए, मेरे ऊपर ही निर्भर न रहिएगा, ये डिस्क्लेमर है। याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरे मेरे एनालिसिस के अनुसार इसमें कई अच्छे पीरियड्स भी आएंगे और बहुत बुरे भी आएंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड रहेगा, लेकिन कब कहाँ आएगा ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, वन वे नहीं रहेगा, एकदम पूरा वॉश आउट गिर जाएगा अदानी की तरफ से, खलास हो जाएगा ये मार्केट, नहीं। क्योंकि कोलैटरल डैमेज हो जाएगा, गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट का भी पलटा हो जाएगा और आप लोगों को बहुत हैवी नुकसान हो जाएगा। सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर्स नहीं, बल्कि दूसरे भी शेयर्स के बारे में मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा जो आपके पॉकेट से रिलेटेड है, जो आपको खुद आपको व्यक्तिगत काफ़ी तकलीफ आ सकती है, जहां पे आपके पैसे बन सकते हैं, वही मैं बताऊंगा। सूर्यकांत यादव जी के सेंचुरी से आपको क्या मिलना है आपके पॉकेट में, आपके फैमिली को क्या उससे बेनिफिट होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, आप लोग इतने क्रिकेट सारा दिन रात सब लोग देख रहे हैं, उससे आपकी माताजी पिताजी को क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी वाइफ आपकी पत्नी को क्या मिलेगा, आपके बच्चे को क्या क्या लाभ मिलेगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी अगर सूर्यकांत यादव जी ने सेंचुरी बनाई। बुरा मत मानेगा, मेरे शब्द बहुत कड़वे, पर मैं कड़वे ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हर इंसान का जो वक्त है संसार में लिमिटेड है। आप वेस्ट नहीं करिए, आपको पता नहीं पड़ रहा है कब वो पलटा मार रहा है। एनालिसिस कहा गया है कि जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप जीतते हैं उनको एक 0.5% जीडीपी का फ़ायदा मिलता है 6 महीनों तक। उससे आप कौन जीता, मेसी जीते, रोनाल्डो जीता, जो जीता, उससे आपके पॉकेट और आपके घर बार को क्या लाभ हुआ, ये आप देखिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जो बताऊंगा जो मुझे दिख रहा है आगे, आपके पैसों को क्या कैसे संभालना है, आपको व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या काम में आएगा क्या नहीं आएगा, मैं उतना ही बताऊंगा। बेकारी का घुमा फिरा के और टाइम में वेस्ट करना किसी का नहीं चाहता, और आप भी खुद का नहीं व्यर्थ करिए। टीवी पे भी देखते हैं तो इसने उसको मार दिया, ये कर दिया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को संभालिए, और कुछ हो सके तो ह्यूमैनिटी के लिए करिए। मैं तो सबको कहता हूँ, कोई जो मैं कहता हूँ जो वृद्ध है, खासकर जो वीक है, जिनके घर में देहांत हो गया, आप उनको हेल्प करिए। ये अच्छे काम है, ऐसे बेकारी का उधर उधर घूम फिर के या न्यूज़ देखना यूट्यूब पे भी फ़ायदा नहीं है। जो अंध विद्यालय है, या जो जिनको रोशनी कम है आंखों में, और ख़ास करके जिनके घर में, मैंने कई बार कहा है, जिसमें घर में निधन हो चुका है, कोई डेथ हो गई है, प्लीज़ गो ऑल आउट एंड हेल्प करिए उन्हें। ये सबसे बड़ी एक कर्म होता है। उनको आप जो भी उनको चाहिए हेल्प, किसी भी तरह में, कुछ पेपर वर्क है, बैंक्स है, वो आप हेल्प करिए। ठीक है, और बाकी डिटेल में कैसे मार्केट रहेगा संपर्क करेंगे हमारे। और प्रीमियम प्लस इंडियन मार्केट के बारे में जानना है तो वो ज्वाइन करिए। यूएस मार्केट्स के लिए प्राइम प्लस ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। तो एंड में मिक्स्ड रहेगा, कुछ रिकवरी भी दिखाई देगी ये हफ्ते में, अच्छी भी रहेगी, और फिर कुछ डाउन भी जाएगा। मत भूलिए बजट भी आ रहा है, वो सब आपको फिर आगे चल के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।